and I'm going to do chapter 10 today of Bihar Economic Survey. And just give me a second. Yes, it's working. So let's start the work. So chapter 10 deals with banking and allied sector, and after chapter 10 there will be two more chapters, and I'll finish in 2 to 3 days. And as I have said you, I'll start with history and science. Please stay tuned with history and science, because I'm a science student, so I might teach science which can help you. And so let's deal with this chapter today. Let's move ahead. But before I move, you people are not subscribing to my channel. So again, every day I say it, please subscribe, if possible, like and share my video. And those who are preparing in English, if any of your friend is preparing in English, please share these videos with them. This video might be helpful to them. Let's start now. So let's do it introduction. So as we all know, in 2016 there is something called Insolvency and Bankruptcy Code आया था, and recapitalization of bank sector. Recapitalization में पता है कितना 65,000 crore rupees दिया गया था बैंक को, so that the status of bank was very bad in India. This led to ताकि financial condition बैंक का अच्छा हो जाए, because okay, so and so what is the aim of bank actually? Aim of the bank is so that everyone will be in the proper banking channel, so that financial inclusion सबका हो. But financial inclusion सेंटर में तो ये cities and town में तो है. I mean everyone, more or less everyone who lives in city and town, they do have bank account, so they are actually connected to banking sector, but those who lives in rural area, the banking penetration in rural area is very pathetic, actually bad. So bad, and they don't have, the rural people don't have bank account also. They don't have any bank account. So in 2014 central government brought a scheme, that is Pradhan Mantri Jan-Dhan-Yojana. I hope you people would have heard about this. इसमें दिसंबर 2017 तक 30.71 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, और if you see in बिहार में 3.23 करोड़. Out of this 2.02 crore is in rural area. So this is the good achievement of Bihar, good achievement in case of banking sector. So now everyone is in the formal banking. Now everyone is in the formal banking scheme. So सबके पास more or less bank account है. But RBI also wanted to create some basic bank, create digital payment, very famous. So digital payments famous बनाने के लिए RBI got 2010-11 में in IMPS. What is IMPS? IMPS is immediate payment service. The characteristic of IMPS is it is for 24 hours. If someone asks, or in any exam if the people ask what is the duration of IMPS, so IMPS duration is 24 hours. And what is the full form? Immediate payment service service. इसमें you can send money from one account to another account within few minutes, and that too 24 घंटे के लिए. But there is something called NEFT and RTGS. RTGS and NEFT is from 8 to 6, or
NEFT is 826 and I think RTGS is 82630 and but minimum amount इसमें 2 लाख आपको भेजना पड़ेगा. There is no minimum or maximum for NEFT. There is a minimum for RTGS which is 2 lakh. So this was a problem. The problem was this you cannot send money beyond certain time. तो उसके लिए सेंट्रल RBI ने लाया this thing in immediate payment service. But this was not enough. So they got something called payment bank and payment bank and small finance bank in 2014-15. The aim was financial inclusion. Financial inclusion was the aim. So let's talk about payment bank for a minute. They first the committee which recommended for creation of payment was Nachiketa More. So Nachiketa More committee, remember this, and 41 applicant आए, ठीक है. The out of that 41, 11 was accepted. 11 were given license for payment bank. 11 bank को मिला. Out of that 11, some of the famous bank which payment bank which is working, Airtel, which was the first payment bank. मतलब अपना सर्विस सबसे पहले एयरटेल ने स्टार्ट किया. And Aditya Birla is other payment bank. Paytm is other payment bank. Indian Post is another payment bank. After Indian Post, NSDL is another payment bank. And then Fins Paytech Limited is a payment bank. And Jio payment bank, that is Reliance Industry payment bank. These payment banks are actually working. Some of the other payment bank which got the license but they are not working are Vodafone is not working. Tech Mahindra, I think Tech Mahindra did withdrawn his thing and said we will not involve in the payment bank. And Dilip's Santilal Sanghai, Dilip Santilal Sang. This 3 payment bank is not working currently, but the payment bank which are working are Aditya Birla, Paytm, Indian Post, Fins Paytech Limited, Airtel, Aditya Birla, as I have already told. So let's talk about the characteristic of payment bank. You can, I think maximum you can deposit 95,000 rupees or I guess 1 lakh rupees. Wikipedia में 95 लिखा है, 1 lakh, but I have 1 lakh होगा, more or less 1 lakh rupees you can deposit. I'll confirm it. But payment bank cannot issue loan नहीं दे सकती payment bank, cannot issue credit card, ये credit card भी नहीं दे पाएगी, but it can issue ATM card ये देगी. Debit card, obviously that debit card means ATM card it will provide you net banking ये दे सकती है, and it will provide you mobile banking. So this is the payment bank. So let's move, and there is something called, hold a second, let me erase all the link. And small finance bank, usko the Usha Tharot, remember this, Usha Tharot, or I'm pronouncing not, Usha Tharot was the actually she was the woman who उसने इसकी कमिटी की हेड थी स्मॉल फिनांस बैंक की. और द बेसिक स्मॉल फिनांस बैंक इज ए बैंकिंग सर्विस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑब्वियसली एक्सेप्ट डिपॉजिट, एंड इवन इट कैन लैंड, ये लैंड भी कर सकती है. मोस्टली दिस इज फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट, ठीक है. Next, this two are payment bank and small finance bank is actually meant for financial inclusion. But our aim was to increase the digital payment. Government's aim. So the government created NPCI, National Payment Corporation of India. ये I think 2008 में established हुआ था. And NPCI launched something called Unified Payment Interface in 2016. And after demonetization,
demonetization, government launched an app that is known as Bheem, Bharat Interface for Money. So ये unified payment system is like, I hope you people would have known this. इसमें you can just send the money from mobile bank to mobile bank, mobile to from bank to bank, from bank account to bank account through मोबाइल नंबर, इधर मोबाइल नंबर और एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस. जैसे भीम में होता है नंबर समथिंग नंबर @ UPI. किसी का एड्रेस भी हो सकता है लाइक प्रवीण KUM10 @HDFC एंड सो डॉट, जो भी है एड्रेस. एंड इफ यू सेंड इन दिस नंबर, दिस एड्रेस और दिस नंबर, द मनी विल गो डायरेक्टली फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम योर अकाउंट टू जिसको आप भेज रहे हैं उसके अकाउंट में. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड एज वी ऑल नो कि द प्रॉब्लम was also there of unchecked NPA. NPA was unchecked in banking sector, और the fraud भी बहुत है. There are so many people who पैसा लेके they just ran away from India. And the debt in उधार नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी में उधार बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. एंड देयर इज ए कंपनी लीजिंग एंड फिनांस सर्विस दैट हैज एक्यूमुलेटेड डेट ऑफ 90,000 crore. थिंक अबाउट दिस. सो ठीक है, इंडियन बैंक. सो दिस टू रिमूव ऑल दिस थिंग द गवर्नमेंट ब्रॉट आउट, गवर्नमेंट क्या लाई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाई. एंड देन कानून को थोड़ा सख्त किया सो दैट एनपीए ना बढ़े एंड सो ऑन. सो इफ़ यू सी इंडिया में देयर 21 पब्लिक सेक्टर बैंक, 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड 49 फॉरेन बैंक, 56 रीजनल रूरल बैंक एंड 156 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड 94384 रूरल कोऑपरेटिव बैंक. ये एक बार आप रट लेना प्लीज़. सो let's move to the next slide. So banking infrastructure, if you see in Bihar, in March 2018 का ये डेटा है, there are 6,906 branches of commercial bank in Bihar. कितना? 6,906. and 62 new branch in Bihar खुला है, और जस्ट ग्रोथ कितना हुआ 0.9%. एक ठीक है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांच सो 50.8%, जितना भी ब्रांच है बिहार में उसका 50.8% आर इन रूरल एरिया. इट्स अ गुड थिंग, राइट. एंड 28.7% इन अर्बन एरिया. एंड इन 20 not urban, this is semi urban area. अर्बन एरिया में 20.5%. सो दिस इज गुड थिंग कि बिहार में रूरल एरिया में बैंक ज़्यादा है. ऑब्वियसली बिकॉज बिहार इज मोर और लेस अ रूरल स्टेट, तो वहाँ ज़्यादा होगा ही. बिहार, इफ़ यू सी, बिहार हैज़ 4.8%, अराउंड 4.8% ऑफ टोटल बैंक इन इंडिया. मतलब इंडिया का 4.8%, जबकि इंडिया पॉपुलेशन बिहार का कितना 8.3 और 8.4 के अराउंड %. सो द बैंक इज़ लेस इन बिहार. So let's talk about cooperative bank. They are state cooperative bank and district cooperative bank. If you see state cooperative bank India में it has increased. Central cooperative bank India में it has certainly increased, and obviously total also it increased. But अगर बिहार में देखें तो state cooperative bank 12 से 2016 में it became 11 हो गया था, and from 11 to 12. So there is no increase in state cooperative bank. District cooperative bank also there is no increase. So total में there is actually no increase, 324 से 324. So cooperative bank ज़्यादा बढ़ा नहीं. So let's move to the next slide. Let's talk about regional rural bank. So regional rural bank बना था with a act, that is Regional Rural Bank Act 1976, याद रखिएगा. And regional rural bank में क्या होता है ना, it is sponsored by central government and state government. जैसे बिहार में बिहार स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक स्पॉन्सरिंग बैंक होगी. स्पॉन्सरिंग बैंक, कोई भी स्पॉन्सरिंग बैंक, SBI भी हो सकती है, एनी वन कैन. सो इफ़ यू सी बिहार की, लेट्स टॉक अबाउट बिहार. तो बिहार में देयर इज समथिंग कॉल्ड बिहार बैंक. पहले 3 रीजनल रूरल बैंक थे, एक बिहार बैंक,
एक मध्य बिहार बैंक और एक उत्तर बिहार बैंक, उत्तर बिहार बैंक. सो व्हेन यू सी बिहार बैंक एंड मध्य बिहार, ये मध्य है एम, मध्य बिहार बैंक दोनों मर्ज हो गया. पहले आई विल टेल यू, ये मध्य बिहार बैंक को ना यूको बैंक स्पॉन्सर करती थी और बिहार बैंक को पीएनबी स्पॉन्सर करती थी और उत्तर बिहार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट हैपेंड, अब दिस टू बैंक, बिहार बैंक एंड मध्य बिहार बैंक गॉट मर्ज्ड एंड बन गया दक्षिण बिहार बैंक, दक्षिण बिहार बैंक. सो नाउ स्पॉन्सरिंग बैंक कौन कौन हो गए, यूको एंड पीएनबी, दक्षिण बिहार की यूको एंड पीएनबी, और उत्तर बिहार बैंक का तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. सो दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट किसान कार्ड. सो ये क्या है, क्रेडिट किसान स्टार्ट हुआ था 1998-99 में. एम क्या था कि भाई लोन, प्रोवाइडिंग क्रॉप लोन, आप लोन देंगे, लोन टू फार्मर, फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब लोन अमाउंट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी लेस ऑब्वियसली. और इसको हु लॉन्च, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सब लॉन्च किया, जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूको, ईटीसी, सारे बैंक ने. रीजनल रूरल बैंक, बिहार में देयर आर 2 रीजनल रूरल बैंक, एज करंटली देयर आर 2 रीजनल रूरल बैंक, उत्तर दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार बैंक, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसने लॉन्च किया था इसको. तो इफ़ यू सी बिहार में का जो एनपीए है बैंक में, एक जस्ट लेट मी टेल यू दिस इज अ गुड पॉइंट. बिहार एनपीए ऑल द बैंक में 10.6% है, विच इज़ प्रिटी हाई, 10.6%, विच इज़ एक्चुअली हाई. एंड मोस्ट ऑफ द एनपीए इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, that is around 17.1%. Why this slide always move? And then MSME में 13.9%. ठीक है. So let us move to the next slide and we talk about financial institution. First financial institution we'll talk about National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD. तो नबार्ड का काम क्या है भाई, लेट्स टॉक अबाउट नबार्ड. नबार्ड हैज़ मैंडेट फॉर फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो. एम क्या है, उधार देना. और क्यों उधार देगा भाई, वाई आई विल गिव यू उधार, बिकॉज यू नीड टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर की डेवलप करेंगे, एग्रो इंडस्ट्री लगाने के लिए, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, रूरल क्राफ्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूट, रीफिनांस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूट. अब समटाइम क्या होता है, रीफिनांस टू लेंडिंग इंस्टीट्यूट, कोई जो किसान होते हैं ना, वो उधार किसी महाजन से ले लिए अधिक रेट में, तो NABARD helps in that also to refinance the lending institute in rural area. And there is a fund with NABARD that is known as Rural Infrastructure Development Fund. Also, और NABARD also provide loan to state government को भी लोन देती है प्रोजेक्ट के लिए, लाइक इरिगेशन का प्रोजेक्ट हुआ, माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट हुआ, एंड इवन फॉर सोयल कंजर्वेशन के लिए, वाटर शेड, मतलब फॉर स्मॉल थिंग NABARD गिव्स द लोन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए, अदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मोस्टली NABARD एक्चुअली गिव लोन फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. As I have already told in rural infrastructure in my previous videos, please check my previous video. And so let's move to the next slide. Let's talk about Rural Infrastructure Development Fund. As I have already told, the central government has initiated a number of schemes like Bharat Nirman, उसका कवर किया, irrigation, drinking water, electrification, road and housing. So this RIDF actually gives loan to cover all this scheme, right? And एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को भी ये पैसा देती है.
मतलब इरिगेशन बेनिफिट को के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ये पैसा देती है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए देती है, एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी देती है। तो बेनिफिट इसके क्या क्या हैं? RIDF के क्रिएट, अगर इस फंड मिल जाएगा तो क्रिएशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, ठीक है, इरिगेशन पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ द स्टेट, और ये क्या होगा? इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाएगा, स्टेट को इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाएगा। एंड कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो द एम, कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट and improvement of or more or less improvement of quality of life. So let's move to the next slide and let's talk about microfinance in Bihar. As you know, there is a major problem in Bihar, poverty, but poverty can be finished by just microfinance. Small amount of money जितना needed उतना you उधार लोन पे दें, then poverty can be reduced. Small amount of money to दुकान लगाने के लिए if we give, जैसे साइकिल ख़राब हो गया, साइकिल की दुकान लगाने के लिए, साइकिल पंक्चर बनाने के लिए दुकान लगाने के लिए, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस if you give, then poverty can be eradicated. And one of the most important thing is self help group. Micro finance will all सबसे ज़्यादा हेल्प करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को. एंड नाबार्ड हैज़ टेकन इनिशिएटिव फॉर डिजिटलाइजेशन. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, नाबार्ड इज़ हेल्पिंग इन दिस. और उसके लिए ई शक्ति विद द व्यू टू फैसिलिटेट, ई शक्ति इज़ द सॉफ्टवेयर विच इज़ व्यू टू फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेज ऑफ SHG. मतलब ई शक्ति बनाया जा रहा है टू फैसिलिटेट क्रेडिट लिंकेज. जितना भी क्रेडिट लिंकेज है ना और सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उसको ई शक्ति से जोड़ा जाएगा. So let's talk about मुद्रा लोन. This is, as you know, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो अप्रैल 2015 में started. The aim was, और कौन कौन कमर्शियल बैंक, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, MFIs एंड NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर सब इसमें इन्वॉल्व है. तो ये एक्चुअली इसका 3 प्रोडक्ट हैं, शिशु, किशोर, तरुण. टू सिग्निफाई द स्टेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट फंडिंग नीड फॉर, मतलब शिशु अगर स्कीम है तो उसमें कुछ कम फंडिंग मिलती है, किशोर में कुछ अलग फंडिंग मिलती है, तरुण में कुछ अलग फंडिंग मिलती है. मुद्रा एक्चुअली इज टू, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज टू दे गिव यू द लोन सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क. तो शिशु अगर आपका बहुत छोटा एंटरप्राइज है तो उसमें शिशु, आई डोंट रिमेंबर कितना कितना पैसा मिलता है, प्लीज़ एक बार आप एक बार देख लीजिएगा शिशु में कितना, शायद दे हैव चेंज्ड ऑल्सो, शिशु, किशोर एंड तरुण में कितना कितना पैसा मिलता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री. और द फंडिंग सपोर्ट फॉर मुद्रा क्या क्या फंडिंग है, द माइक्रो क्रेडिट स्कीम देगी फॉर लोन अप टू 1 लाख, माइक्रो क्रेडिट स्कीम थ्रू MFIs, ठीक है. रीफिनांस स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक and scheduled cooperative bank, and women entrepreneurship program and securitization of loan protocol. So long portfolio. So इतने इस तरह के फंडिंग मिलते हैं माइक्रो फाइनेंस में. So guys, this is the end of the video. So please subscribe to my channel, like and share my video if you share my videos if you like them, and remember every Sunday I'm doing weekly current affair, and mostly I cover 50 question in English and of whole week. This will help you in BPSC exam. Thank you. Bye bye.